everyone, today we're going to learn about chemical combinations. What are chemical combinations, you might think? In your textbook it might be written as when two elements meet they give out a product. That is correct, but these chemical combinations have 5 basic laws. Out of these 5 basic laws we are going to learn 3 basic laws. So these laws will help you in your 7th and 8th grade. Okay, the other two remaining laws, like the Gay-Lussac law or the Avogadro's law, it will come to you in your 11th and 12th standard. Until now, 3 laws are enough for your 7th and 8th grade. So let's get started. So the first law is the law of conservation of matter. So this law was published by Antonio Lavoisier in 1789 after he analyzed a series of combustion reactions. तो जब 1789 में एंटोनियो लावाइजर बोल के एक जो केमिस्ट थे उन्होंने एक सीरीज ऑफ एनालाइज किया और एक बेसिकली एक कंबशन रिएक्शंस को देख के ये लॉ पब्लिश किया. So in this law, it stated that in a chemical reaction, nothing is created or destroyed. Elements just get rearranged in new combinations. Basically, it says ever since the earth was created, nothing else has been created, nothing has been destroyed. They are just exchanging their chemical properties. उनके केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो बदलते जा रहे हैं. ओके, सो by the 1800s 30 elements were discovered. So now you might be thinking, what about compounds? Compounds are basically like two molecules held together by chemical bonds, right? So compounds are not just random mashup of elements at different proportions, but a perfect blend of different elements in fixed proportions. So they have to have a perfect value, a perfect proportion, or a perfect volume. So for example, I have water, right? Water is made up of exactly 2 volumes of hydrogen and gas and one volume of oxygen, exactly, right? So it has to be exact a value. And next we have the law of constant proportions. So this law is stated by Joseph Proust, and it states that chemical compounds are made up of elements that are present in फिक्स्ड रेशो बाय मास. एक फिक्स्ड रेशो होती है, वो रेशो के डिवाइड करें मास, तो केमिकल कंपाउंड्स के एलिमेंट्स. ओके, मोर इन डिटेल हम आपको एग्जांपल के साथ दिखाएंगे. अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का एक एग्जांपल है. इफ यू टेक 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर, ये उसको उसके कंपोनेंट में स्प्लिट कर दिए. वाटर के अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, राइट? सो यू विल गेट 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो इसका रेशो क्या है आपको बोलेंगे. सेकंड एग्जांपल इज, if I take 90 grams of water, you will always get 10 grams of hydrogen and 80 grams of oxygen. 90 grams अगर से आप वाटर के लिए, उसके आपको हमेशा ग्राम्स कितने? 10 ग्राम्स हाइड्रोजन आएंगे और 80 ग्राम ऑक्सीजन के आएंगे. तो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ओके, so the ratio which it consists is 1:8, 1 of the hydrogen and the 8 part is of oxygen, right? So now we have the next law is the law of multiple proportions. This law it states that the proportion of components जो proportion होता है उसके components से divided by the weight in a given compound will always be the same regardless of the origin source. ये आपको फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आएगा, लेकिन इसको हम अभी आपको समझाएंगे. तो इसके जो कंपोनेंट्स होता है, जो प्रोपोर्शन होता है इसके कंपोनेंट्स का, जैसे कि वाटर का कंपोनेंट्स क्या था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. उसके जो प्रोपोर्शन होते हैं डिवाइडेड जो उसका वेट होता है मास का, उसको एक गिवन कंपाउंड विल ऑलवेज बी द सेम. ओके, तो रिगार्डलेस ऑफ द ओरिजिन सोर्स एक्सेट्रा. So आपका क्वेश्चन आएगा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. सो वन मोर थिंग, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो होता है उसको आप डेफिनेट प्रोपोर्शन बोल के भी जान सकते हो. इट इज द सेम. डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज लाइक द सेम बट जस्ट अ डिफरेंट नेम. सो द डिफरेंस बिटवीन इज दैट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस इट states about 2 or more element compositions more than compound, whereas the law of constant proportion states about
the composition of elements in one compound. इसमें one compound है, whereas multiple proportions दो से ज़्यादा elemental composition और more than one compound. Okay, so जो ऐसे discovery stage, these discoveries led to John Dalton's atomic theory. This led John Dalton to revive his atomic theory. जो जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उन्होंने फिर से रिवाइव किया. जो उनकी थ्योरी ये थी कि इट स्टेट्स दैट ईच एलिमेंट वाज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजिबल एटम्स. ओके, तो ये थ्योरी के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे. जब तक के लिए प्लीज बी श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब, और आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेशनल लिखी है तो प्लीज शेयर इट, like and subscribe. If you have any doubts, go in the comment section and I will surely help you out. Thanks for watching.